very good morning to all of you. Welcome again. In this session, we are going to continue with our session based on report and indices. And today we are going to talk about global innovation index report, right? So I hope I'm clearly audible and visible to all of you. So those who are watching live, please quickly join in and do mention into the comment section if everything is fine from my side, so we can start our today's discussion, right? In our previous session जहाँ पे हमने ethics के बारे में we practice more than 30 questions. जिन्होंने भी वो आपका मिस किया, please do watch that particular session. Very important one for your upcoming RBI Grade B examination. So now एक सेशन आपका हर दिन मंडे टू सैटरडे आपका होता है at 6 p.m. सो सैटरडे को हम लोग आपका इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन इंडाइसेस के ऊपर बात करते हैं. सो टुडेज रिपोर्ट इज जनरली बेस्ड ऑन indices, which is basically India's performance toward the innovations, right? So it could be a descriptive topic as well. ठीक है, तो यहाँ से आपको जो descriptive data है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है, so yes, we have everyone Ramsen, very good morning. I hope everything is fine. Thank you so much. Yes. Chalo. So now today's report is based on Global Innovation Index 2024, and it's a comprehensive analysis as well from 2015, where India's rank was 81st position out of 133 countries. सो 133 कंट्रीज में आपका इंडिया का जो रैंक था दैट वाज 181st, एंड इन 2014 वी रीच टू अ माइलस्टोन ऑफ 39 नंबर. ठीक है, सो 2024 आपका जो इंडिया का रैंक है दैट इज एट 39 पोजीशन. ठीक है, सो वी विल डू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस स्कीम्स विच जनरली सपोर्ट द innovations in India as well as other aspect, right? तो जैसे हम लोग हर बार आपका करते हैं, it is a 15 to 20 minute session where we generally analyze the important areas of that particular report and basis of that particular report and the other factors, India's performance and leading performance by the world nations as well as the emerging nation. So same thing, same way we are going to discuss this particular report as well, right? So Global Innovation Index was launched in 2007. The historical background of this particular one, through a collaboration between INSEAD and a prominent business school and World Business, a British magazine. So INSEAD and World Business, they generally publish this particular report on annual basis since 2007. It offers a comprehensive evaluation of global innovation by tracking the performance of 133 economies worldwide. The Global Innovation Index serves as a benchmark resource that chart global innovation trend, guiding policymakers, business leaders, and other unleashing human ingenuity to improve lives and address shared challenges including climate change. So these are some areas जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर आपका बेसिकली they generally get based on those particular areas. Basically we generally release this particular report and we generally rank 133 countries in the world, right? So India has achieved a significant milestone in global innovation index 24, scoring a 39th position among 133 economies. This leap in ranking reflects India's commitment to fostering a robust innovation ecosystem that is underpinned by strong policies, investment in research and development, and a collaborative environment for startup and industries which lead to ease of doing business, right? So these are some different areas आपका जिनको कहीं ना कहीं आपका फोकस करते हुए या जिनको ध्यान में रखते हुए आपका रहे. So we generally prepare this particular report, and India's performance that drastically got changed in past few years. तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या फिर आपका जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है दैट इज मोर टुवर्ड दी आपका न्यू स्टार्टअप्स एंड अदर्स. तो जो स्टार्टअप कल्चर आपका बिल्डअप हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर, दैट रियली
that is the one part, and another side, the policies or the liberalization of policies, or even the government support through different scheme like startup, stand up, mudra scheme. So these are some schemes which generally support this particular culture, और जिसका outcome is this, ठीक है, जिसका outcome आपको कहीं ना कहीं screen पे आपका देखने के लिए मिला. So while you write the descriptive about this particular topic ना, so you have to have include these particular things, ठीक है. Especially what are the initiative which are generally taken by the government. You have to compare with the past data ranking, and what are the what are the challenges still we are facing, team, and what are the solution for those particular challenges. And your conclusion part should be outcome oriented, future outcome oriented, कि कहाँ पे और चीजें आपका improve की जा सकती हैं, and what is the scope and others, right? So बहुत basic आपका the country's growing innovation potential has been supported by a government initiative that prioritize technological advancement, ease of doing business and entrepreneurship. ठीक, so ये कहीं ना कहीं broader अगर हम बात करें, if you talk about the broader agendas of the government policy making, so these are like kind of we are working on technology, technological advancement, and another one is ease of doing business, relaxation in norms and others, and increasing or basically supporting the entrepreneurship culture in the economy. So these are three broader pillars behind this particular innovation. Okay? So this impressive achievement is a clear indication of India's emergence as a global innovation leader, a feat that also uh, underscore its rapid transformation from developing country into a hub cutting edge technologies and scientific breakthroughs, right? So that is the one. ठीक है, आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पे इकोनॉमिकल आपका कहीं ना कहीं अगर हम एज अ कंट्री आपका देखते हैं तो उसको प्रेज किया जाएगा ऑब्वियसली, कि ये मतलब कहीं ना कहीं इफ वी हैव अ आउटकम तो उसके लिए आपका कुछ इस तरीके से जो एरियाज आपके रहे, ठीक है, एंड व्हाट इज हैपन गुड इन पास्ट फ्यू ईयर्स, तो वो कहीं ना कहीं यू हैव टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर वन ऑल्सो. ठीक है, तो बेसिकली लाइक ऑब्जेक्टिव वाइज इट इज वेरी सिंपल, कौन रिलीज करता है, रैंक क्या है, टॉप कंट्रीज कौन है, ये सब आपका रहता है. बट हाँ, descriptive wise you have to give references of these particular one. I'll give you references for some other organization also like VPO and others. तो उनकी जो आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंडिया की रैंकिंग कैसी रही है या अदर्स जो रेफरेंसेस जो आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, so in a span of nearly a decade, India has made a tremendous stride in GII ranking, rising from 81st position to 39th in 2015. ठीक है, and this steady climb reflect the country's focus approach toward the nurturing innovation access across various sectors, driven by strong governmental support and a robust intellectual property framework as well, right? So this achievement highlight India's growing leadership in innovation, especially as the country rank first among 10 economies in सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया. तो अगर हम लोग बात करते हैं आपका सेंट्रल एशिया और साउथर्न एशिया की, तो वहां पे आपका आउट ऑफ 10 कंट्रीज आपका इंडिया इज एट टॉप एंड फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल इकोनॉमीज. ठीक है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज के हिसाब से अगर आप रैंकिंग देखते हैं, अगेन वी आर एट 1. ठीक है, फर्दरमोर India ranked fourth globally in the World Intellectual Property Organization WIPO, Science and Technology SNT, then a cluster ranking with key cities like Mumbai. मतलब अगर हम लोग इनकी बात करें टॉप बिजनेस ओरिएंटेड सिटीज, लाइक वी हैव ऑल दी जो आपके टियर 1 सिटीज हैं या फिर आपके जो महानगर हैं, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, listed among the world top 100 S&T science and technology clusters in the world, right? So worldwide भी अगर हम लोग देखते हैं, so they are generally part of this particular one. ठीक है, so apart from like what I did basically in this particular one, तो जैसे आपका जो हमारा इनोवेशन इंडेक्स है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसको और आंसर्स के थ्रू या और फैक्ट्स के थ्रू हाउ यू कैन सपोर्ट योर आंसर्स, सो दैट आई इंक्लूडेड फ्यू पार्ट ऑल्सो. ठीक है, कि जो कहीं ना कहीं मतलब उसी से रिलेटेड आपके जो अदर पॉइंटर्स आपके रहे हैं, हाउ दे आर जनरली गोइंग टू सपोर्ट योर आंसर इन अपकमिंग एग्जामिनेशन और the objective as well. So additionally, India stand as 7th globally in intangible asset intensity and excel in innovation output, ranking 33rd
marking notable improvements from the previous years. This recognition underscore India's continued dominance and leadership in innovation across multiple sectors. ठीक है, तो यहाँ तक आपका आई होप समझ में आया होगा सबको. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल वन. ठीक है, सो आपका इनोवेशन वाइज हाउ वी आर डूइंग, बेसिकली इनोवेशन मींस टेक्नोलॉजी, मींस आपका जो न्यू आइडियाज इन अदर्स और एंटरप्रेन्योरशिप. तो किसी भी एरिया के ऊपर इफ दे आस्क यू टू राइट समथिंग, सो यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट और जो डेटा हम लोग आपका यहाँ पे डिस्कस करें उन सब के बारे में. ठीक है, सो इंडिया इज रैंक 39 लीडिंग द इनोवेशन चार्ज आपका. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 24 इम्प्रूव ग्लोबल रैंक. ठीक है, जैसे आपका they clearly stated in this particular report itself. So out of 133 countries, India at 39 position. Earlier it was 41 position. Top performance, if you talk about this, so India ranked first among 38 lower middle economic economies, income economies, maintaining its leadership. Innovation output strength की अगर हम लोग बात करें, India excel in innovation output, ranking 33rd as improvement from the last year as well, right? So next one, in 2024 editions, if you talk about the international लेवल, ठीक है, तो जो वर्ल्ड लेवल पे आपका जो इकोनॉमीज है उनका परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मर कौन रहे हैं आपका इस पूरी लिस्ट के अंदर. ठीक है, सो इट इज टॉप बाय स्विट्जरलैंड. ठीक है, देन वी हैव स्वीडन, देन वी हैव यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, then we have Singapore and we have UK. ठीक है, have emerged as the world most innovative economies. ठीक है, और most of the time you will see these particular countries, they are generally part of this particular list. ठीक है, जो टॉप 10 के अंदर आपको रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस पर्टिकुलर कंट्रीज. ठीक है, जिसमें आपका सरप्राइजिंगली जैसे यूजुअली आपका जैसे हम लोग जैसे एसडीआई या अदर्स ह्यूमन डेवलपमेंट के अराउंड जाते हैं तो नॉर्डिक नेशंस जो उसमें आपका रहते हैं. ठीक है, जिसमें आपका जैसे यहाँ पे भी स्वीडन, स्विट्जरलैंड और अदर्स ये हैं. ठीक है, बट इस रिपोर्ट के अंदर भी दे डू हैव अ एक्टिव वन, राइट. स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, देन आपका थर्ड नंबर पे यूएस है, देन वी हैव सिंगापुर, देन वी हैव यूके आपका. ठीक है, सो दिस इज वन. However, India, along with China, Turkey, Vietnam, and Philippines, has been recognized as one of the fastest rising economies in terms of innovation over the past decade. ठीक है, तो अगर हम लोग इन सब कंट्रीज की बात करते हैं डिकेड वाइज आपका अगर कंपैरिजन करते हैं, सो दीज आर द कंट्रीज जो फास्टेस्ट ग्रोइंग आपका इकोनॉमीज के रूप में आपका निकल के आए हैं in term of innovation development, right? So important initiatives. So now what are the initiatives which are generally taken by government of India toward the innovations or toward the ease of doing business or toward the building of entrepreneurship culture in the economy. So in which eventually lead your global innovation index. Okay? So India rise in the global innovation index reflect not only the country's remarkable progress, but it also its growing potential to emerge in a global hub of innovations through initiative like Startup India, Digital India, and Atal Innovation Mission. The Indian government has continuously fostered entrepreneurship, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड अदर्स. ठीक है, सो दीज आर सम मेजर, लाइक इसमें ही आपका अदर स्कीम्स आल्सो आर देयर. ठीक है, जैसे आपका मुद्रा स्कीम इज देयर और इवन लाइक वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर मुद्रा स्कीम. ठीक है, सो अभी उसका लिमिट्स भी आपका इंक्रीज किया गया. इसके अलावा देयर वाज अ स्कीम कॉल पीएम स्वनिधि या अदर्स, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं आपका जो बेसिकली जो न्यू आइडियाज आपके हैं या कहीं ना कहीं अटल इनोवेशन मिशन के अंदर देयर आर नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं आपका ये जो रेगुलर जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बिल्ड करने में या उनको कहीं ना कहीं सीड फंडिंग प्रोवाइड करने में आपका मदद कर रहा है. ठीक है, इवन सम टैक्स रिफॉर्म्स आर आल्सो देयर, लाइक जैसे ड्यूरिंग द यूनियन बजट वी गवर्नमेंट जनरली अबॉलिश द एंजल टैक्स. ठीक है, ये सारी चीजें तो ये कहीं ना कहीं दैट जनरली सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, देयर आर सम अदर की प्रोग्राम्स, जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें. ठीक है, you'll find this particular data on PIB website. Okay? So Genesis, we have Genesis. Okay? So if you talk about Genesis is an ambitious umbrella scheme launched by MEITY with a budget of 490 crores over 5 years aimed at discovering, supporting and accelerating innovation startup in smaller cities and town across the India. First one आपका. इसके अलावा
नेजिस की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए फोकसिंग ऑन ट्वेल्थ टीयर टू एंड टीयर focusing on 12 tier 2 to tier 3 cities to promote widespread innovation across India. ठीक है. Then we have Tide 2.0. ठीक है. So aim to empower 51 incubators and support 2000 tech startups over 5 years. Then we have COE. ठीक है. So अगर हम लोग इसकी center of excellence, so center of excellence aim to support 58 startup over 5 years by providing infrastructure, resources, mentorship and funding. So these are some major or dedicated schemes for the innovations or to support the innovation culture in the country. ठीक है. So ये कहीं ना कहीं the outcome of these particular one is that particular report and the out performances in that particular report. ठीक है. So जो हमारा जो leading performance आपका रहा है कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रैंक हमने आपका अचीव किया, सो दिस इज काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स और दीज काइंड ऑफ innovation under Atal Innovation Mission or individual schemes. So that is generally the outcome of this particular one, right? So sorry. So Global Innovation Index. ठीक है. So अभी मतलब there are three major pillars जो इंडियन इनोवेशन कल्चर को आपका सपोर्ट करी है. दैट इज वन इज दिस स्टार्टअप कल्चर, आपका जो बिजनेस सेटअप वाला जो पॉइंट है. अनदर वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा आपका चीज़ें जो आपके इम्प्रूव हुई हैं. ठीक है. विच लीड टू द लिबरलाइजेशन एज वेल. ठीक है. एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जिन्होंने आपका कहीं ना कहीं द इनिशिएटिव विच हैज जनरली टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to support those kind of cultures or to provide subsidies in all. तो ये आपका जो कहीं ना कहीं जो एरियाज जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. तो ये एक छोटा सा रिपोर्ट. इफ समथिंग यू फाइंड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, और डिस्क्रिप्टिव में बहुत बार वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स या अदर्स इन सब के बारे में बात करते हैं. सो इफ दे आस्क अबाउट द इनोवेशन कल्चर इन इंडिया और द स्टार्टअप कल्चर और मतलब कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, तो इन सब के बारे में बात होती है, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डेटा एंड यू कैन राइट. तो अगर जब आप रेफरेंसेस के साथ लिखते हैं चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है. ठीक है. सो आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. ठीक है. बहुत बेसिक सा आपका छोटा सा रिपोर्ट था, और उस रिपोर्ट का यूजेस कैसा है उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करी, एंड हाउ यू कैन लिंक दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट विद एग्जिस्टिंग और अदर रिपोर्ट्स. So that generally I try to create a sync also, right? So this is it. Okay. If you have any queries, any questions, so you can ask your queries through comment section. And just before this particular session, I did a session based on the ethics question. Okay. So there was 30 question based on ethics, and ethics is again very important topic, guys. Please do not ignore that particular one. Okay. अब मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं, इसलिए मुझे बार बार ये चीज़ बोलना पड़ता है. एंड एथिक्स इज लाइक कि दैट विल बिकम गेम चेंजर. यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव, और अगर डिस्क्रिप्टिव में नहीं होगा, देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चन इन योर ऑब्जेक्टिव साइड. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज आपका 4 to 5 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव होगा इधर इट विल बी फॉर 10 मार्क्स और 15 मार्क्स क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. Weber sir, very good, very good morning. ठीक है. You are a little bit late. ठीक है. So there are like every Saturday we generally discuss a report. So this Saturday there was a Dasara. तो सब लोग आपका दशहरा सेलिब्रेशन में थे. So that's why we shifted these two session for Sunday. ठीक है. तो आज हमने दोनों सेशन कर लिए हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज आप उनको देखें. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम गाइज, so like if you have any question about the examination or any examination, so there is a form which is given in your description box. So do fill that particular form so that those questions will come to us and we will connect to you, right? So we will guide you how to overcome with those particular challenges, or what is the problem and what can be the solution, best solution for that particular one. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, और इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है. चलो, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, आज के लिए आपका इतना ही होगा. देन नाउ आई विल सी यू इन द आरबीआई ग्रेड बी क्रैश कोर्स एट 4 PM. ठीक है. सो टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर ऑल.